Assalamu alaikum, everybody. This is your host Salman Daud with the Work Life Stories with Salman. I welcome you all to another episode with Work Life Stories with Salman with another special guest, Mr. Syed Ali Shehzad. He is from insurance and banking background, having a lot of experience at Mizan, Allied, and currently working as a VP at Alikhan Insurance Brokers. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? Welcome, Salman. How are you doing? How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? I'm perfectly fine. I'm sorry, just got a bit late to just get the thing No started. I'm worries. sorry. No worries, sir. Thank you very much. So for today's, we have selected topics for climate change and the role of insurance in Pakistan, and secondly, the traditional banking and digital banking in Pakistan. To start Yeah. with, sir, could you please share a little about your professional journey, how you entered the financial and insurance sector, and what shaped your career path? Okay. Thank you, Salman, for inviting me again. Thank you for this. My career journey, it just encompasses around altogether 20 years plus. I started from Union Bank and then moved to Standard Chartered Bank. I worked with Allied Bank for 8 good years. Yeah. And for around last 10 years, I was serving Mizan Bank, that definitely the Islamic version of banking. And recently, I just got a second transition of my career towards the insurance brokerage industry. Yes. First transition I had from the conventional model of the banking towards the Islamic model, and now towards the Islamic banking से insurance brokerage की तरफ. The main reason behind is that pehle we used to just make up the monies as much as unable possible, like through the deposits schemes and different segments through the liabilities and all that, and on the other hand side through the credits and lendings and financing, SME financing, corporate financing, commercial financing, the car financing, and there are so number of different modes of financing and lending options available with the conventional and the Islamic models. The transition towards a insurance broker is that now I want to just do something for the protection and the security Yes. of the human being, their families, their businesses, and their assets. Because for a financial modeling, you have to just align all the things together. Like for instance, if you are just keep on depositing your money in the bank without investing, it's Yes. not the financial management. Financial. If you are saving the money in the banks, you are making the investments the wise and a viable investments in the stocks or the mutual funds or different options available in the commodities and all that. Even the equation is not completed because after having both the things together, any of the untoward situation happens, like the climate change, like the Yes. disasters, like the flood, like the fire, Mhm. like so many different sort of calamities it's just going to be happened. So your investment, your savings are all just going to be vanished with a click of a spur of a second. So Exactly. now your financial management की equation जो है, it's gonna come up by adding the insurance, protection, Mhm. and security as well. Exactly. So So this what is challenges? Yes, please. the rationale is that Mhm. कि हमारे पास सेविंग्स के साथ या तो लोगों का सेविंग का इतना ज्यादा रुझान पाकिस्तान में नहीं है. जी. We are not basically saving prone. If I talk about the investment वाली side, even though हम शायद investment में इतने नहीं है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन सिक्योरिटी में तो शायद हमारा जो परसेंटेज है इस सेक्टर का, इस इंडस्ट्री का जो टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी है, जी. इट्स लेस देन द 1%. So you can understand that 99% GDP comes through different segments and only 1% GDP falls under the bracket of insurance. And the most important thing is that कि पाकिस्तान को अगर हम उसकी लोकेशन और जो ज्योग्राफी के थ्रू Geography. अगर हम आप देखें, Pakistan is among the top 10 most vulnerable countries in the world with respect Exactly. to the climate change. Mhm. जो हमारे पास 2022 के अंदर जो डिजास्टर आया था, जो फ्लड्स आए थे, we lost around 30 billion.
जी। अभी का भी जो डिजास्टर है वो भी मोर और लेस 30 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट नॉट द 30 बिलियन पीके। हम्म, इवन दो जो लॉस है वो यही है और ऑन द अदर हैंड साइड जो हमारी रेमिटेंस इनफ्लोज हैं वो अराउंड 38 बिलियन है। सो फ्रॉम 38 बिलियन, 30 बिलियन लॉस, यू आर नॉकिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। सो जो हमारे इनफ्लोज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते इन द circumstances of we gonna have that much number of losses just because of the floods and the climate change. So this is a high time. जी। We, being a human being, we as a family member or the protector of a family, as a business owner, as a corporate, हम्म, as a government entities, as a policy makers, we have to just come up together and we have to design and we have to align ourselves to safeguard the mitigations of the climate change. Otherwise, we would be entirely at a different position as what we are right now. So it's a high time to take the corrective measures and the corrective steps. And ये सारी चीजें collectively होती हैं। अगर मैं चाहूँ मैं कुछ कर लूँ या गवर्नमेंट चाहे कोई गवर्नमेंट कुछ कर ले या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ कर लें, we cannot do it. We have to just have an amalgamation of all the sectors of our society. There are major issues like creating awareness and building trust. Like, what challenges does Pakistan insurance That industry is that face? is that is the main reason, Salman, Yes. why I'm on your platform. Not only on your platform, I have been to different platforms as well before. और मैं continuously I'm just trying to create the awareness as masses by utilizing आप लोगों का जो channels हैं, जी। because it's a the social media is basically the game changer. जो मार्केटिंग के टूल्स पहले होते थे, द डोर टू डोर और डिफरेंट एटीएल्स करके, बीटीएल्स करके, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट गोना वर्क. जी। You have to create the awareness by the most adoptable and the media which is being under utility of the masses. So that's why आप लोगों का जो चैनल है, आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, it's just gonna create a lot of change, a lot of change in the जी। perception of the people. How do they take the climate? How do they take the insurance? How do they take the financial management as a bigger canvas? So this is the main reason I'm in front of you. Thank you. इंश्योरेंस Sir, को लोग yes. अभी तक हम जो समझते रहे, इंश्योरेंस इज बेसिकली नॉट योर कॉस्ट. जी। नाउ इट्स बिकम योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. और ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, आपकी सेविंग्स की, आपकी एसेट्स की प्रोटेक्शंस हैं. हम्म, जब तक लोग इसके बारे में समझेंगे नहीं कि ये प्रोटेक्शन, हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोटेक्शन इज, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. जब आप हॉस्पिटल जाते हैं आपके पास कोई चैनल नहीं होता, आप एक्सपेंडिचर्स कहाँ से बेयर करते हैं. हम्म, अगर कोई किसी किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फायर स्ट्रोक हो जाता है, तो आप उसको कौन कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे. आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे गोना गेट वैनिश एट अ स्पर ऑफ अ सेकंड. जी। So this is a high time we have to think about it, especially. I would like to add one thing. पाकिस्तान का जो 90% बिजनेस है सलमान, it is contributed through the SME sector in Pakistan. जी। And SMEs are the most vulnerable sector in regards of their savings, in the regards of their investment in their business entities. वहाँ SMEs को इतनी फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है. They have to protect more heavily हम्म, than the well-established corporates or the well-established institutions. Because generally SMEs जो हैं वो आपके या तो proprietorship concerns हैं या partnership concerns हैं. सो पार्टनरशिप्स में और प्रोप्राइटरशिप में मेरी जो अपनी सेविंग्स होती है, मेरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, दे आर गोना प्ले द रोल ऑफ एन इक्विटी. जी। तो इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और एनी ऑफ द मिसहैप हैपेंस, मेरी सेविंग्स, मेरी इक्विटी, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, वो सब की सब स्टेक पे लग जाती हैं. तो इट्स बेसिकली फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर सेफ गार्डिंग योर फ्यूचर एंड प्रेजेंट. यस।
Sir, what innovative insurance solutions or products could help protect communities and businesses against like climate risks? देखें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में Mhm, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं टू गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड। mhm, आपकी जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ के काफी सारे ऑप्शंस हैं। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज, अपनी चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, आप अपनी जो 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 प्रोविडेंट फंड है, पेंशन्स हैं, इसकी बात करते हैं। जब हम बिजनेस में आते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका आपका फायर है, आपका मरीन है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, mhm, और डेफिनेटली कॉर्पोरेट के लिए विच इज जो इट्स बेसिकली द टॉक ऑफ अ टाउन दीज डेज, दिस इज द cyber insurance. I don't want to quote the name of the organizations who have been vulnerable to such cyber attacks. जी, So बहुत सारी corporates अब हैं जो कि they are just trying to just get drive the mechanism with the insurance companies and with the insurance brokerage houses to get protected their cyber security as well. Climate, it's very important. जो क्रॉप इंश्योरेंसेज हैं आपके जी, पास लाइव स्टॉक इंश्योरेंसेज हैं, आपके पास देयर आर so many different number of protection insurance protection insurance coverages are available, because right now if I'll start talking about the different modes of the coverages तो मेरे ख्याल में मैं शायद 1 घंटे उसको उसी पे बात करता रहूंगा. जी, I really wanted to give a flair. Think yourself to get insured and get a proper plan or the policy for either yourself or your family, for your business, for your organization, for your livelihood. For that, insurance companies are already working. And most importantly, the insurance brokerage companies are also working just like mine. Although we are the newly established insurance brokerage company, but what we have to do, we are there to create the awareness. I don't know whether you have seen such awareness sessions or whether you have conducted such awareness session with any other of the corporates. But being the AIB, we take it as our CSR, as a responsibility to जी. educate, to create the awareness among the masses to why we require the insurance protection. This is And all insurance about awareness, I protection guess, is for very now. important. Yeah, it's awareness, it's education, it's educating the masses. And the same thing at AIB, at the platform of AIB. The first thing which Exactly. what we have started doing is to Mhm. create the awareness, to educate the masses why it is required. And you have to just have that to save your future, to save the future of your family, to save the future of your businesses. Like And different AI softwares. don't take this as a cost. Yes, It's basically your financial protection. It's yes. your financial protection. Like for now, for the awareness, like everybody has their mobile phone in their hands. For AI, different AI softwares, even they can search by their own self, get aware about this. Yeah, there are so many different options are available. Exactly. आप अपने मोबाइल के ऊपर यूज करके इवन माइक्रो क्रेडिट जिस तरह होते हैं, इसी तरह माइक्रो इंश्योरेंसेस भी हैं। जी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऑफर कर रही हैं। इवन इंश्योर टेक कंपनीज हैं जो कि बेसिकली आपका जो अ, जिसका मेन फोकस जो है वो रूरल, अब रूरल स्ट्रीम है, जो कि अनबैंक्ड एरिया है, जो कि इतना एजुकेटेड नहीं है, जहाँ तक एक्सेस ऑफ द फुल फ्लैज बैंकिंग या फुल फ्लैज इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है। जी। वहाँ पे आपकी इंश्योर टैक्स आर वर्किंग, एंड दे आर डैम नंबर ऑफ इंश्योर टैक्स आर जस्ट अराइजिंग इन द मार्केट ऑफ पाकिस्तान। बट उस तक जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी ना कि आपको उस चीज की जरूरत फील हो। जब आपको ये जरूरत फील होगी कि मेरे पास 10,000 रुपए रखे हैं, 10,000 रुपए मैं सेव कर लूं, ना कि मैं बाहर खाने पे चला जाऊं, तो जरूरत जी। फील, इट्स जस्ट लाइक टू क्रिएट द नेसेसिटी। हम्म, आपको लग रहा है कि आपके पास 50,000 रुपए सेविंग है, तो आप जाते हैं, जाके सर्च करते हैं, जी मैं स्टॉक में किसी बेहतरीन स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्ट। आपकी नेसेसिटी है। तो इन द जी, सेम वे
insurance has become your necessity. हम्म, You have to just adopt that कि आपकी necessity है. हम्म, जब necessity होगी तो फिर आप different options भी उसके ढूंढेंगे. हम्म, और अब तो it's a open media. It's a yes, open media. You can just search out each and everything. Depends on your preferences and your necessity requirement. It's exactly. just one thing, one click, the change of mind games. That's it. जी, जी. Sir, बिकॉज let's जब हम jump to पढ़ाई yes. कर रहे थे ना सलमान, जब हम अपनी जी, पढ़ाई जी, कर रहे थे तो शायद सेविंग का तो कॉन्सेप्ट पता था, इतना जी, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, और जी. फ्रेंकली इंश्योरेंस का तो बिल्कुल ही नहीं पता था शायद. लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम्म, डॉक्टर की फीसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बिल हैं, एडमिट होने के बिल हैं, एक्सीडेंट्स हैं, क्लाइमेट के इश्यूज हैं, फायर है, देयर आर सो मेनी डैम नंबर ऑफ हेल वी आर जस्ट लिविंग इन. सो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं, और हमने उसके साथ इवॉल्व होना है टू जस्ट जस्ट मेक अप अ गेम टुगेदर. अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं चली जाएगी, हमारी हम्म, जरूरियात कहीं चली जाएंगी, और हम वहीं के जी, वहीं खड़े रह जाएंगे. जी. I got to know about this like in my bachelor's. Like I have a bachelor's degree in actuarial sciences. So उससे ओके. मेरी ज़्यादा knowledge increase हुई about insurance, pension and all, risk and finance basically. So दैट्स that प्रीटी made me ग्रेट. interested. दैट्स प्रीटी Yes, ग्रेट. yes. तो आप कह लें कि Why majorly don't why do instead of just going towards a part of a sales or the marketing, why yep. don't you be a actuarist? Okay, so I had a plan. Majorly, if you see that in Pakistan, we don't have that much opportunity as in abroad, for my Yeah. knowledge, actually. So when I took the break, like I had my bachelor's in 2022. So then I took a 2 year gap. For that, I joined different companies. For that, I joined sales and marketing. So then I got interested in sales and marketing. So that's how I'll be planning to pursue it. Uh, uh, there are so many damn number of careers Mhm, which are not basically time barred, mhm. which are not boundary barred. Exactly. Just like your HORE, Mm, the world is open for you. exactly. The world is open for you. Sales, definitely, the world is open for you. The marketing, the world is open for you. Mm, सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसी इसी डिस्कशन में कि जब आप अपना कैरियर बनाने जा रहे होते हैं तो चूज वाइजली योर कैरियर. yes. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपको एक नौकरी मिली और Mm, आपने वो जाके नौकरी कर ली, mm, आपका वो कैरियर ग्रो तो नहीं होगा उधर, आप mm, कैरियर को परसू करते रहेंगे, mm, अचीवमेंट कुछ होगी नहीं, मिसमैच खड़ा रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी इंडस्ट्री जिसमें काम कर रहे होंगे वो सेटिस्फाइड नहीं होगी. So mm. always think about your preferences. Yeah, the It's thought important behind कि like आप अपने आप को exactly. evaluate करें कि what you are and what best you are in and what best you can deliver to the organization, and especially not to the organization, to your homeland. आप इस होम अल्टीमेटली क्या होता है, जो भी काम करते हो, whatever, Mm, एक yes. क्लर्क काम कर रहा है, एक बाहर ठेले वाला काम कर रहा है, एक कॉर्पोरेट का जीएम है, एक एक Mm, सीईओ काम कर रहा है, अल्टीमेटली क्या है, इनकी एक एक की जो एफर्ट्स हैं, एक्टिविटी हैं, mm, they are just gonna accumulated in terms of your GDP. yes. तो जो भी काम कर रहे हो, just do the best thing out of your mind, out of your body, out of your physical contribution, by your Exactly. mental contribution, और जो आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं for the best of your nation. Mm, exactly. So, sir, let's jump to another topic for today, like traditional banking and digital banking. Like, what are the main opportunities and challenges digital banking bringing to traditional banking institutions in Pakistan? ओके देखो, ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है ना, इट्स मोर और लेस लाइक द पेपर वर्क. Hmm, एंड जो डिजिटल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, इट्स ओवर द क्लिक. hmm, पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है और जो डिजिटल बैंकिंग है, hmm, दे आर मूविंग
in parallel, हम्म, बिकॉज हमारी बहुत सारी आबादी ऐसी है जिसको हमें मैनुअल इंटरफेस देना है। जी, और जो आप लोगों की जो जेन जी और डिफरेंट जीज आजकल डिफरेंट जनरेशन आ रही हैं, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स टैबलेट्स एंड द मोबाइल फोन्स, तो हमने उनको भी एग्जैक्टली। डिजिटल एस्पेक्ट्स देने हैं। हम्म, राइट नाउ नो वन इज विलिंग कि वो जाए और जाके फंड ट्रांसफर कराने के लिए वो एक लाइन में लग जाए। इवन आई डोंट गो, इवन यू डोंट गो, वी रेदर एग्जैक्टली। प्रेफर आईपीएफटीज। हम्म, मुझे बैलेंस देखना है अगर, तो मैं कॉल नहीं करूंगा बैंक की ब्रांच को, क्योंकि मुझे पता है उसकी कॉल चलती रहेगी, कोई फोन ही नहीं उठाएगा। हम्म, तो रेदर मेरे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है, अब तो व्हाट्सएप बैंकिंग अवेलेबल है। एग्जैक्टली। सो इट्स बेसिकली द स्लो बट ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म, इवन अभी ऐसी ब्रांचेस भी आप देखेंगे, इवन देख रहे हैं होंगे, दे आर एग्जिस्टिंग, कि जहाँ पे मैनुअल इंटरफेस भी है और उसके साथ डिजिटल इंटरफेस भी प्रोवाइडेड है, जी, कि जिसने जाके अपना कैश चेक डिपॉजिट करना है काउंटर पे, वो काउंटर भी जा रहा है। और जिसने सीडीएम्स यूज करनी है, कैश डिपॉजिट मशीन यूज करनी है, वो हम्म, सीडीएम्स को यूज कर रहा है। तो वी आर जस्ट मेकिंग देम अलाइंड विद द टेक्नोलॉजी। जी, जब एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट अलाइन हो जाएगी हाउ टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, तो वहां से वो मैनुअल इंटरफेस रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एग्जैक्टली। बिकॉज टिल नाउ वी आर हैविंग द नेसेसिटी ऑफ दैट। And especially in the rural area, we have a lot of opportunity for the growth of these traditional banking. अब तो आप देखते हो भी कि branches कैसी होती हैं, वो premium banking style बिल्कुल। branches हैं, they are जी, the huge castles like branches हैं। जी। So definitely there is a demand, हम्म, that's why we are having that, and there is a demand of the digitalization as well, so we are having the digital products as well. जी। And how do you see the integration of insurance, banking, and digital platforms creating new opportunities for customers, like in future? Sorry, I didn't get your question. Like, how do you see the integration of insurance, banking, and digital platforms creating new opportunities for customers in the future? Okay, for instance, I have a हम्म, bank account, जी, and I can see different options available on the web page हम्म, of this bank, which caters the different products and services of हम्म, insurance. I will go, I'll choose the plan according to my requirement, according to my risk appetite, according to my financial appetite. I'll just click that. हम्म, My data is going to be transmitted to the insurance company, insurance provider, and my account is going to be auto debited. जी, एंड 3 4 5 6 दिन के अंदर मेरे पास मेरी पॉलिसी रेडी होके मेरे पास हम्म, आ जाएगी। तो ये मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊं, वी आर आई मीन एट एआईबी, मेरा हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है टू हैव अ collaboration and partnerships with the banks and with the microfinance banks. जी, And inshallah, we have started working on it. Inshallah, we just gonna have a long-term collaboration, the partnerships with the microfinance banks and the banks which are still traditional, and the digital banking side as well, ताकि लोगों के लिए ईज क्रिएट करें। मतलब इंस्टेड कि मैं एज ए ब्रोकरेज हाउस और एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट या ब्रोकर जाके आपको समझाए, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी बैंक के वेब पे। हम्म, फॉर दैट वी नीड टू हैव अ कोलैबोरेशन। जी, एंड डेफिनेटली वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सलमान, कि देर इज नो फ्री लंच। हम्म, वी हैव टू हैव, हर काम के लिए, हर बिजनेस ऑप्शन के लिए वी हैव टू हैव अ बिजनेस वायबिलिटी। हम्म, सो वी इंशाल्लाह अगेन आई एम सेइंग इंशाल्लाह, over the platform of AIB, Ali Khan Insurance Brokers Private Limited, we gonna inshallah create
the collaboration and partnerships with different microfinance banks and the banks itself, Inshallah. just to create the insurance ease for the masses. जस्ट लाइक अभी आप देखते हो ना, अभी आपके पास डिजिटल अकाउंट्स भी अवेलेबल होते हैं. जी. पहले at any cost you have to access the branch to get your account open. आप डिजिटल अकाउंट्स अवेलेबल हैं, हर बैंक के पास अवेलेबल हैं. Mm, So in the same way, the insurance protection would be available, inshallah, with each and every of the bank's platform. mm, exactly. Definitely, this is my will, this is my wish, and I can only just get the things done depending on the business viability, the commercial viability over the board of these different microfinance bank or the banks. Mm. Sir, as this podcast would be followed by the young ones and for the ones who are entering into the fields. So, for young professionals aspiring to enter the fields of insurance, banking, or financial services, what skills and mindset should they develop? Uh, देखें, जब भी whenever you are a part of the service industry, जी. और इसको फर्दर रिफाइन करके कहूँ फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, Mm, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you must know about your customer. mm, You must know about the customer inside. You must know about the customer analytics, which we can just easily have it through using AIs. mm, Customer segmentation, कौन सी टारगेट मार्केट में हमें काम करना है, कौन सी mm, टारगेट मार्केट को हमने इक्विप करना है, कौन सी टारगेट मार्केट इट्स वन ऑफ द मोस्ट lucrative for us, because there is no free lunch. We are the commercial entities. So we have to just see कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ उसकी profit viability or the business viability क्या है. जी. So if you want to be a part of the banking or the insurance or the asset management company, और इसके अंदर आप कस्टमर सेगमेंट को देख रहे हैं अगर आप, तो you must know about the customer, जी. and you have to be loving meeting different people. You have to see the different diaspora in Pakistan. Mm, हर customer की different mindset है. You have to understand each and every's mindset. जी. हर रूरल एरिया की, हर शहर की, हर कस्बे की मेंटालिटी डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है. So you should love interacting with the people. Mm, If you are not liking to get networking or to just get interacting with the people or with the customer, it would be very difficult for you. जी. All right. Thank you very much, sir, for taking your time. I am sure that everybody who's going to listen this podcast would be getting great knowledge. Thank you for sharing the insights. Thank you very much. My pleasure, Salman. I just want to have a closing note. जी. Financial management is very, very, very important जी. in each and every lifestyle Mm, of the people, mm, whether it's student, young professionals, family runners, mm. uh, homemakers, जो घर की जो Housewife. खवातीन है जो घर चला जी. रही हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें तीन जी. पिलर्स हैं. एज फार एज माई नॉलेज एंड माई वर्ड्स आर कंसर्न, तीन तीन पिलर्स पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट खड़ी होती है. फर्स्ट इज द सेविंग थ्रू द बैंकिंग. द सेकेंड इज the investments Mm, through different modes like stock exchange, like mutual funds, through brokerage houses who deal with the जी. stock market. And the जी. third is the insurance. Protect yourself through the insurance. Very Otherwise, things would be different. good. जी. Thank you very much, sir. Jazakallah. My pleasure, Salman. Thank you. Thank you for inviting me on your platform. Thank, Thank you. thank Thank you you. for being on the show. Jazakallah. Thank you. Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz.